Good morning students, welcome to Vanik Smart Classes. आज आम डिस्कस करवा some important questions related to SI police. देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी to change the selected text to all capital letters, click the change case button. To change the selected text to all capital letters, click the change case button, then click dash. तो आ भितर को ऑप्शन टा आपण क्लिक कले तो आम selected text to capital letter करि पारिबा. प्रथम ऑप्शन देछि अपर केस क्लिक करिबा ना अपर ऑल करिबा ना कैप्स लॉक करिबा ना लॉक अपर करिबा ना लार्ज साइज करिबा. देखिए क्वेश्चन अछि selected text to all capital letters, click the change case button. तो केस बटन थिबारु आम एडी चूज करिबा अपर केस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाई इज इट ऑथेंटिकल टू शेयर कॉपीराइट्स फाइल विथ योर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स को जो आम कॉपीराइट मेथड यूज करचे नॉट ए लीगल वर्सन आम इलीगल वर्सन यूज करचे से आम एथरू को ऑप्शन टा चूज करिबा. इट इज नॉट अनएथिकल बिकॉज इट इज लीगल. इट इज अनएथिकल बिकॉज द फाइल्स आर बीइंग गिवन फॉर फ्री. ना शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट सिंबल लॉज. Now it is not unethical because the files are being given for free. It is not unethical. Anyone can access a computer. तो ये भीतर को ऑप्शन चूज कले राइट आंसर हम दे अनएथिकल टू शेयर. शेयर मीन्स आमे विदाउट परमिशन ने शेयर करबा. दैट इज शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक कॉपीराइट लॉस. आंसर हला सी आमे आंसर करबा आठी. Next question is the simultaneously processing of two or more programs by multiple processor is called dash. तो simultaneously जते हमें देखो जदि टिके क्वेश्चन चेंज होता ना तो simultaneously more than one program are run in a single processor से जगह आमे करथांते multitasking. किंतु एठी अछि कोना simultaneously processing two or more program by multiple processor थिबारु एठी आमे आंसर करिबा मल्टी प्रोसेसिंग. तो हियर द राइट आंसर इज मल्टी प्रोसेसिंग बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट ना प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर सेति में आमे यूज करिबा मल्टी प्रोसेसिंग. Next question, to access properties of an object, the mouse for technique to use in dash. जदि कौन सी ऑब्जेक्ट रो मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखिया चाहिबा कौन सी ऑब्जेक्ट रो प्रॉपर्टीज देखिया चाहिबा सिलेक्ट कर साला परे कू क्लिक हम इवेंट करबा तारी राइट क्लिक. तो एठी हम अछि राइट क्लिक. आंसर हला राइट क्लिकिंग. तो राइट क्लिक एनी ऑब्जेक्ट ऊपर जेतले हम राइट क्लिक करबा तार प्रॉपर्टीज हमें शो करिया. प्रॉपर्टीज लाइक कट करवा किंबा कॉपी करवा कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देखा बेले आम आदरे राइट क्लिक ऑप्शन क्लिक करवा. Where you are likely to find embedded operating system. embedded operating system जनरली आम कोट यूज करवा. प्राय टाइम क्वेश्चंस आसे जे embedded operating system कोट यूज फास्ट देने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज न करी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम आम यूज करता. ऑल्सो इन नेटवर्क पीसी ऑन ए नेटवर्क सर्वर किंतु ऑन ए पीडीए वी कैन यूज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आंसर करवा पीडीए. Next question, which of the following is a content on a chip connected to the system board and is a holding area for data instruction and information processed data waiting to be output secondary storage.
एक्चुअली को एरिया रे डाटा स्टोर होगी रेडी टू यूज हो रही था। प्रथम ऑप्शन प्रोग्राम, सेकेंड ऑप्शन माउस, थर्ड ऑप्शन इंटरनेट, फोर्थ ऑप्शन मेमोरी, फिफ्थ ऑप्शन अच्छी मोडेम। एक्चुअली को जगार डाटाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड रहे से आम मेमोरी कह जाए। नॉर्मली कंप्यूटर रे मेमोरी कहले राम को बुझाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी को आम रीड राइट मेमोरी कह जाए, ऑल्सो कह जाए वेटिंग रूम। वेटिंग रूम भी कही पारे कारण डाटा जिते प्रोसेसिंग हम शुड बी वेट इन राम, से आम वेटिंग रूम कही पार। इट इज ऑल्सो कहते स्क्रैच पैड मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी भी आम कही पार। तो जिते प्रकार फीचर्स ना आपको रेलवे आम वेराइटी टाइप्स ऑफ नेम रे नहीं पार्चे। तो रीड राइट मेमोरी, वेटिंग रूम, राम, स्क्रैच पैड मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, बहुत मेमोरी आम इंट्रोड्यूस आ भितर कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग दौचे। तो ये नॉर्मली होल्ड करे कौटी ना मेमोरी, मेमोरी कहले राम को बुझाए। तो हियर इज राइट आंसर इज मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ ए डास आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जिते आम कंप्यूटर को बंद करवा एक्चुअली डाटा को कंटेंट रु पड़े बा डिलीट हो। तो जिते आम राम को कहले वोलाटाइल इन नेचर, राम को जो कहूँ आम वोलाटाइल इन नेचर, तो वोलाटाइल मीन्स व्हेन द पावर इज फेल्योर द डाटा विल बी लॉस्ट। जदि पावर फेल्योर होगला तो डाटा ऑटोमेटिकली कौट लॉस्ट हो, राम रु लॉस्ट हो। तो ये राम को कहले आम जाने राम इज अदरवाइज नोन आज मेमोरी। आम कहते इन केस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड आज राम। तो हियर इज राइट आंसर इज मेमोरी। व्हेन द पावर इज फेल्योर बट द कंटेंट विल लॉस्ट डास आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जो आम पावर टर्न ऑफ करदे कौटू लॉस्ट हो, एक्चुअली मेमोरी डाटाटा लॉस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड। देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन ना, इट्स ए इंटेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भितर डिफरेंस कौन ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर व्हेयर इट रन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, रन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। जदि आम एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवा से कौन दरकार ना सिस्टम सॉफ्टवेयर दरकार। तो आ भितर को ऑप्शन आम ट्रू हम ना, अलाउज द यूजर टू डायगोनाइज एंड ट्रबल शॉट द डिवाइस, ना इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी स्वीट, ना इज एन ऑप्शनल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, ना हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेस। आ भितर आम कोटा ट्रू करवा ना, जदि आम डिफॉल्ट को जाई पारिबा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय डिफॉल्ट कौन कह ना सिस्टम सॉफ्टवेयर ना कह ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम काम कौन ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जनरली हृदय कहले कौन कहे ना हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहीं क्या को हार्ट कह जाउची ना, इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो से मैनेज कर ऑल द रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कह जाए। तो ये आम आंसर कौन करवा ना, ही हेल्प द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आंसर करवा ई। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द इंटरनल रिसोर्सेस एज वेल एज हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हियर इज द राइट आंसर इज helps the computer manage internal resources. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर इन ए डैश। तो आम पर्सनल फाइल एक्चुअली कौट आ भितर स्टोर करवा। ऑप्शन अच्छी माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट। तो ये जो चारिटा ऑप्शन रहा, माई फोल्डर एक्चुअली कस्टमाइज फोल्डर, माई फाइल्स और जो कस्टमाइज, माई टेक्स्ट इज ऑल्सो ए कस्टमाइज फोल्डर। किंतु कस्टमाइज फोल्डर तो आम स्टोर कर, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स, से आंसर रहा माई डॉक्यूमेंट्स। तो माई डॉक्यूमेंट्स इज ए डिफॉल्ट फोल्डर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जदि डिफॉल्ट फोल्डर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है
ताहले हम कौन करबा ना पर्सनल फाइल्स आर केप्ट इन ए माय डॉक्यूमेंट। हियर इज द राइट आंसर इज माय डॉक्यूमेंट। When you save to this, your data will remain intact when the computer is turned off. Next question थिला कौन करिया ना computer is turned off means जदि आमे कंप्यूटर को टर्न ऑफ करी दबा तो डाटाटा आधे लॉस्ट हेबनी किंतु एक्चुअली ता भीतर रिमेन कांस्टेंट हे कि रहइबो। किंतु राम रो प्रॉपर्टी कौन कहला राम प्रॉपर्टी कहूची व्हेन द पावर इज फेल्योर डाटा विल बी लॉस्ट। तो एठी कोन ना लॉस्ट हेबनी तो ऑब्वियसली राम नो अपोजिट फॉर्म कौन अछि रॉम। रॉम इज ए परमानेंट इन नेचर। तो जेते आम मेमोरी को क्लासीफाई कले दुई प्रकार गोटे प्राइमरी मेमोरी आ गोटे सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इनक्लूड गला राम और रॉम। देख ये दुटा हूँ कौन ना आम राम को कहले भोलाटाइल इन नेचर। जिते आम भोलाटाइल इन नेचर कहले तो सेकेंड पोजिशन क्या करें ना सेकेंडरी मेमोरी। कहीं सेकेंडरी मेमोरी ना सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट मीन्स परमानेंट ये स्टोर कले जदि किसी आम डाटा लॉस्ट हो जाऊँगी ताले परमानेंट मेमोरी जीवार ना। तो से क्वेश्चन है व्हेन यू सेव टू दिस योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट व्हेन द पावर इज ऑफ ता माने रिमेन कांस्टेंट रह को मेमोरी रे। तो ये आंसर करबा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी डाटाटा कांस्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द डैश। आ भितरु मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द यूनिट सिस्टम इज डैश माने डैश इज ए हाउसेस ऑफ द हाउस ऑफ ऑल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डैश इज ए हाउसेस ऑफ ऑल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम माने कंप्यूटर जिते गुड़े सिस्टम सब यूनिट्स रहा सी जाए कौटी स्टोर होती ना कौट स्टोर होती आंसर करिया कौन ना मदरबोर्ड। सबू जाक यूनिट कहीं स्टोर होती डैश इज ए मेन सर्किट बोर्ड दैट सिस्टम यूनिट इज द स्टोर। सबू जाक मेन सर्किट बोर्ड गुड़ा जाकि मदरबोर्ड स्टोर होती कहती मदरबोर्ड। आंसर करवा मदरबोर्ड। क्वेश्चन पड़े मदरबोर्ड इज अदरवाइज नोन एज डैश ताकू सिस्टम बोर्ड भी कहा जाए। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड। तेणु एठू आम आंसर करवा सी इज द राइट आंसर दैट इज मदरबोर्ड। इट्स ए मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम to store data or perform calculations। देखो प्रथम ऑप्शन अच्छी बाइनरी सेकेंड है ऑक्टल थर्ड डेसिमल हेक्साडेसिमल। दीज आर द फोर फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम रे चारिटा फॉर्म है बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो आ भीतर को नंबर सिस्टम आमर कंप्यूटर स्टोर करे तो कंप्यूटर करना आज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर हूँ कौन ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो इट ओनली नोन टू स्टेट। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है से मात्र दुईटा स्टेट ऑक्युपाई करे। कौन गोटे ना ऑफ स्टेट आउट ऑन स्टेट। तो ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट बाय 0 ऑन स्टेट रिप्रेजेंट बाय 1। सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। तो ये 0 एंड 1 भीतर किए को फॉलो करछि ना बाइनरी कंसिस्ट ऑफ 0 आउ केते ना 1 ऑक्टल हैला केते ना 0 to 7 डेसिमल हैला 0 to 9 हेक्साडेसिमल हैला 0 to 9 A to F। A2 में F मीन्स A हैला 10 B 11 अप टू F हैला 15। तो जेहेतु आमर 0 to 9 आमर दरकार ओनली 0 एंड 1 तो 0 एंड किए होल कर ना बाइनरी। तो राइट आंसर आम कौन करवा बाइनरी। कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम
used to store data and perform calculation, that is answer is binary. तो binary perform करूथिबार आको binary language कहा जाए. देखो next question, in what you can force a page break. What you can force a page break means वार्ड रे आमे कोन करछे ना जदी इटा वार्ड डॉक्यूमेंट हैला ये जदी सिंगल पेज हैला आमे चाहूचे आकु डबल पेज करिया पई बा नेक्स्ट पेज गोटे करिया पई आमे फोर्सफुली पेज ब्रेक दवा चाहू तो आ भीतर को आंसर चूज करिया. ऑप्शन दे बाय पोजिशनिंग योर कर्सर टू द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग F1 की. प्रथम जदी आमे F1 की मारिबा आ द्वारा पेज ब्रेक हेई परिबो कि ना नहीं ना बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल एंटर. नेक्स्ट ऑप्शन को जी कौन मारिया कंट्रोल एंटर. थर्ड ऑप्शन को जी बाय यूजिंग द इंसर्ट सेक्शन ब्रेक बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड नन ऑफ दिस. आ भीतर को ऑप्शन चूज करले आम गोटे फोर्सली पेज ब्रेक दे परिया. तो एठी आम डायरेक्ट ऑप्शन कौन चूज करबा ना पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल एंटर फ्रॉम कीबोर्ड. दैट मीन्स कंट्रोल एंटर इज द शॉर्टकट की ऑफ पेज ब्रेक. So here the right answer is B. Kind of control enter है it is a shortcut key of page break. Next question, dash is the processing of dividing disks into tracks and text sector. ट्रैक्स एंड सेक्टर कौन ना जिते आम गोटे कम्प्लीटली गोटे डिस्क आने डिस्क सेप हो सब कौन थाए ना राउंड थाए. तो राउंड थे आम रेडी टू यूज करवा गोटे डिस्क को आम केमती यूज कर पारिया. तो डिस्क यूज कला माने आमको सेक्टर आउ ट्रैक रे तैयारी करिया पड़िबो. माने एक्चुअली डिस्क भीतर एई भले हमर राउंड करिया को पड़िबो. तो राउंड कर साला पर आदरे सेक्टर आउ ट्रैक सब तैयारी करा जायंती. तो ये नंबर ऑफ सेक्टर और नंबर ऑफ ट्रैक्स रे डिवाइड कले जाएंगे डाटा स्टोर हो पारिबो. डाटा ऑलवेज स्टोर इन सेक्टर वाइज. सेति आम डाटा को स्टोर करिया खेले हमको कौन करिया पड़िबो ना आधे हमको एक्चुअली जो एम्प्टी डिस्क आणु आगे करू एम्प्टी डिस्क आनी सारा पर प्रथम है एम्प्टी डिस्क. एम्प्टी डिस्क पर कौन करा जाए ना पार्टीशन करा जाए. पार्टीशन मीन्स ना ड्राइव क्रिएशन. पार्टीशन मीन्स ड्राइव क्रिएशन. तो ड्राइव क्रिएशन कर सारा पर ड्राइव को रेडी टू यूज करने को हेले बा डाटा स्टोर करने को हेले तापर स्टेप होची फॉर्मेट. तापर स्टेप होची फॉर्मेटिंग. तो फॉर्मेटिंग माने कौन आर अल्टरनेटिव क्वेश्चन. फॉर्मेटिंग रो दीटा ऑप्शन अछि. इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग. इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग हार्ड डिस्क or any other storage device for its use. It's a process of preparing hard disks or any other storage device for its use. ता माने गोटे डिवाइस को मुझे यूज करी से मत फॉर्मेटिंग करिया पड़े. और आ गोटे प्रोसेस अछि. इट्स ए प्रोसेस ऑफ creating. It's a process of creating new sector and a tracks. It's a process of creating new sector and tracks for data keeping. It's a process of creating new sector and tracks for data keeping. Data रखिबा केले हमको फॉर्मेटिंग करिया पड़े. सेति क्वेश्चन अच्छी डैश इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इनटू सेक्टर एंड ट्रैक्स. से आंसर करिया हम कौन ना फॉर्मेटिंग. पुण जदि ये क्वेश्चन फॉर्मेटिंग जो डॉक्यूमेंट भीतर आसो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग इन डॉक्यूमेंट से टाइप क्वेश्चन केमती आसे ना डैश इज ए प्रोसेस टू चेंज द appearance of document. Dash is a process to change the appearance of document. तो डॉक्यूमेंट appearance को चेंज करा ताकि भी कहती फॉर्मेटिंग.
सेठी डॉक्यूमेंट थिबार सेटा फॉर्मेटिंग एठी किंतु नॉर्मली न्यूज सेक्टर एंड ट्रैक्स थिबार आंसर कोन ना फॉर्मेटिंग तीनटा क्वेश्चंस आसे फर्स्ट क्वेश्चन आसे डैश इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग हार्ड डिस्क और एनी अदर स्टोरेज डिवाइस फॉर इट्स यूज दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आसे इट्स ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यूज सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा केमिंग दैट इज आल्सो नोन एज formatting. But in case of Word document, dash is a process to change the appearance of documents. That is also answer is formatting. So answer is formatting. Next question is grouping and processing of all forms transaction at one time is called. जदि हमें at a time ऑल ट्रांजैक्शंस को आम एकाथरे फंक्शंस करिया चाहूचे तो ताको आम कौन करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करवा ना बैच प्रोसेसिंग करवा ना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ना ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखो ये बैच माने कौन बैच माने कौन ना एट ए टाइम मोर देन वन एग्जीक्यूटिव फाइल can be run. तो जदि at a time more than one executable file को run कले ताकले batch processing. सेति पे क्वेश्चन है grouping processing of all farm transaction at one time is called batch processing. एठी हम आंसर करिया करना batch processing. An online discussion group that allows direct live communication is known as dash. जदि हमें direct communications कले live communication is known as dash. तो live communication कोउथरे करि परिबा हमें वेब क्रॉलर रे करि परिबा ना चैट ग्रुप रे करि परिबा ना रीजनल सर्विस रे प्रोवाइड करि परिबा ना हाइपरटेक्स्ट करिबा ना ईमेल करि परिबा. देखो जेहेतु हमर डिस्कशन ग्रुप अछि तो सेठी कोन करिबा चैट ग्रुप साज रे हम करि परिबा. Which of the following can be used to select the entire document? Entire document को हमें select करिया कले entire document means देखो एठी जदि हमर more than one page अछि एक नंबर पेज दुई नंबर पेज तीन नंबर पेज चार नंबर पेज को जदि at a time हमें select करिवार अछि सेति पई शॉर्टकट यूज करिया Ctrl+A आंसर करिबा Ctrl+A. It's a shortcut used to select entire documents. And website main page is also called as website रो main page को कौन कहा जाए ना obviously its answer is home page. The website रो main page को कौन कहा जाए ना home page कहा जाए. The process of transferring files from computer and the internal to our computer is called as. तामन क्वेश्चन कौन थिला ना क्वेश्चन अदगा प्रकार आसे जेमने it's a process of receiving information. It's a process of receiving information from remote system or internet to our local system. Is known as downloading. तामने क्वेश्चन थिला इट्स ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जगह हम रिसीविंग करि पारे. इट्स ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट सिस्टम और इंटरनेट टू आवर लोकल सिस्टम इज आल्सो नोन एज कौन करि परिबा ना डाउनलोडिंग. एठी हम आंसर करिबा डाउनलोडिंग ना द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू आवर लोकल कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग. Which of the following is a program that uses a variety of different approach to identify and eliminate spam? आदरू spam को eliminate करिया कले को ऑप्शन टा हमें यूज करिबा. देखो
को ऑप्शन यूज करिया ना डायरेक्टरी सर्च सर्च ऑप्शन आमे डिलीट करि परिबा ना एलिमिनेट करि परिबा नै एंटी स्पैम प्रोग्राम रे एलिमिनेट करि परिबा ना वेब सर्वर इज एलिमिनेट करि परिबा किंतु वेब स्टोरफ्रंट क्रिएशन पैकेज रे हम कोन करबा ना डिलीट करि परिबा सेति पई आंसर हैला डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम दैट यूज ए variety of different approaches to identify and eliminate. You can dash a search by providing more information the engine can use to select small more than useful set of result. ता माने you can search करिबा को ऑप्शन साजरा में सर्च करिया refine expand load and query. देखो आ भीतर सर्च करिया माने सर्च करिया पई हेले हमको किसी क्यूरी दबा पड़ो ना विदाउट क्यूरी आम सर्च करें आम एक्चुअली देखुचे इंटरनेट रे सब सर्च करा जाउची कि तापाई करेस्पॉन्डिंग क्यूरी सब लिखा जाउची करेस्पॉन्डिंग क्यूरी कारण क्यूरी साहाय्य आम सब काम करिया पड़ी था देखो क्यूरी केते प्रकार था ना QURY क्यूरी गोटे था DQL मीन्स डाटा क्यूरी लैंग्वेज DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज TCL है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यही पांचटा क्यूरी लैंग्वेज रे आमे डाटाबेस को सब कंट्रोल करता एटा क्यूरी लैंग्वेज मीन सिलेक्ट हो गोटे ऑप्शन जेति कि आमे फेच करा को सेति पे ऑप्शन यूज करू सिलेक्ट आ DDL आमे यूज करू क्रिएट आउ इंसर्ट आउ DML यूज करू कोन ना अपडेट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट आउ DCL कौन डाटा कंट्रोल है ग्रांट आउला इनवोक आउ TCL जो आम कमिट आउला रोल बैक ता माने डाटाबेस ट्रांजैक्शन सबू जाक काम ये चारिटा कमांड साहाय्य हो पारुथिबारु ए पांचटा को कहते क्योंटा ना क्यूरी QURY हियर इज द राइट आंसर इज क्यूरी. A disk content that is recorded at the time of manufacturing that can be changed or erased by users means जो डाटा टा हमर मैन्युफैक्चरिंग समय रे लिखा होई आछे जे बा क्रिएशन हेई कछि ताकू आमे डिलीट करि पारेनी ता भितर हमर को मेमोरी अछि मेमोरी ओनली राइट ओनली वंस ओनली रन ओनली ना रीड ओनली जितने आम राम आउ रोम को चूज कले प्राइमरी मेमोरी रे राम आउ रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी राम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स व्हेन द पावर इज फेल्योर डाटा विल बी लॉस्ट बट इन केस ऑफ रोम माने कौन ना रोम है रीड ओनली मेमोरी इट इज ऑलवेज इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सो दैट इट कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड इरेज ये मैन्युफैक्चरिंग समय होउथिबारु आपको अल्टर्ड आउ इरेज करि परिबा नाही तो आंसर करिया रीड ओनली मेमोरी को आमे अल्टर करि परिबानी कि इरेज करि परिबा नाही सेमती क्वेश्चन पड़े डैश मेमोरी इज रिटेन ओनली वंस को मेमोरी थरे मात्र रिटेन करा जाय सेटा कि ना रोम नले पी रोम भी आंसर करि पारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इज द फॉर्म ऑफ रोम अब बेले बेले क्वेश्चन से लेटेस्ट फॉर्म ऑफ रोम इज दैट इज EEP रोम electrically erasable programmable read only memory. So here is the right answer is read only. Video processor consists of dash and which store and processing image. देखो video processor consists of dash तो वीडियो प्रोसेसर कौन कंसिस्ट करे ना CPU and VGA ना CPU and memory ना VGA and memory ना VGA and DVI none of these. तो वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश कौन कौन दरकार वीडियो प्रोसेस रे CPU दरकार और वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर दरकार सेति पे आंसर ला CPU एंड VGA CPU ला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट VGA ला वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर और RA. A person who used his expertise to gain access others people computers information illegally or damage is known as dash आ माने कोन हला
ना जदि गोटे इनफॉरमेशन प्रोग्राम कंप्यूटर स्टोर होइके अछि आउ जने आको हैक करिया चाहूँ हैक करिया चाहूँ मीन्स ए डाटा को से नबा को चाहूँ क्वेश्चन इज व्हिच इलीगली लीगल ऊपर न नहीं इलीगली ऊपर नौ थिबारु आर आंसर हो हैकर आंसर है हैकर हैकर डेफिनेशन इटसेल्फ सैया ए पर्सन हु इज एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस others computer information illegally is known as hacker. Here is the right answer is hacker. Dash are attempts by individual to obtain confidential information by you classifying their identity. एठी आंसर कौन करे ना फिशिंग ट्रिक करिबा ना कंप्यूटर वायरस करिबा देखो कंप्यूटर वायरस रे केबे तुमको क्लासीफाइंग दर आइडेंटिटी करिबा नाही स्पाईवार भी सेया स्पाईवार काम भी सेया ये करि परिबानी अब वायरस तो जानछो it's a specialized program replicate itself without user knowing damage is being done in computer that is the definition of virus एटा भी हबनी अब फिशिंग स्कैम भी हबनी तो एठी हम आंसर करे ना Phishing trips are the attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity. Here is the right answer is phishing trip. The default view in Excel is dash. Excel नो default view कौन था ना default view जेमती Word document रो default view ला print layout सेमती पावर पॉइंट ला नॉर्मल तो एटी सेमती कौन अछि ना आर कू लेआउट हमर दरकार देखो ये जो ऑप्शंस दिया जाइछि ना ऑटो लेआउट नाही वार्क लेआउट भी नाही रोमान लेआउट भी नाही तो आंसर कौन रहला नॉर्मल तो डिफॉल्ट व्यू ऑफ एक्सेल इज नॉर्मल आंसर रहला नॉर्मल The dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser. जदि हमें open in one browser रे कहबा ताको कोन कहया multiple website means जदि दा documents वे जब जदि हमर सर्च इंजन में डबल डॉट गुटे यूज करलो gmail.com एठी गुटे खोलना पुनी gmail आउट साइड एठी गुटे खोलना पुनी जदि ymail यूज करले एया को एक्चुअली कोन कहया जाय ना एया एक्चुअली टैब्रो कहया जाय टैब्रो तो टैब्रो देखि के आंसर हमें कोडी करबा तो आंसर 3 नंबर ऑप्शन अछि टैब्रो द dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in a one browser आंसर करबा टैब्रो which ports connect special type of musical instrument to sound cards ता माने मदरबोर्ड रे को पोर्ट यूज कले हमें साउंड तैयारी करि पारे बाबा साउंड यूज करि पारिया जनरली बॉस यूज करले हमें कोन ना डाटा पाई यूज करिबा सीपीएल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूएस वाला यूनिवर्सल सीरियल बॉस जोड़ा हमें पोर्ट यूज करू किंतु को पोर्ट द्वारा एक्चुअली ना मिडी पोर्ट द्वारा साउंड हमें इफेक्ट करा कारण मिडी पोर्ट फुल फॉर्म भी सही है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस आ साहाय्य आम कौन करथाउ ना जेल्ले आम साउंड कार्ड इंट्रोड्यूस करथाउ बा साउंड कार्ड इंस्टॉल हो सारा पर तुम साउंड यूज करे तो हियर द राइट आंसर इज मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस Next question है to reusable of an optical storage have typically acronomy dash reusable माने आउ थरे आमे यूज करि परिबा देखो प्रथम ऑप्शन अछि CD रो फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क आ मीनिंग करना कंपैक्ट डिस्क जदि आमे CD अछि CD रो सेपरेट डिफरेंट टाइप्स रो फॉर्म अछि गोटे CDR आउटला CD/R/W आउटला CD/RW देखो एर फुल फॉर्म है CD रिकॉर्डेबल आर है रीड स्लैश राइट एटा री राइट देखो रिकॉर्डेबल आई जो CD भीतर डिफरेंस कौन ना थरे जदि आमे किछटा राइट कर दबा आउ थरे आमे राइट करि परिबा नाही बट इन केस ऑफ
CDRW माने रियूजेबल माने थरे राइट कर साइला परे आउ थरे आमे राइट करि परिया तो इठी आमे आंसर करिबा कोन ना CDRW तो आंसर ला RW मीन्स एठी जो RW लिखा है चाना ला रीराइटेबल माने ला टू reusable optical storage will typically have the acronym RW. Next question, the system unit provide, actually system unit कौन provide करूची ना system unit provide प्रथम option देइछि coordinating input output devices, ना is the container that houses electronic components, ना is the combination of hardware software, ना controls and manipulates data, ना does the arithmetic operation. System unit provide आमे तले पूर्वरु डिस्कशन कले दे system unit जोड़ा आमे कहूचे जे सिस्टम बोर्ड ताकू कुछ आमे मदरबोर्ड कहीं कहले ना इट हाउसेस ऑफ ऑल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ताने होची कंटेनर जोटी की सब जा कंपोनेंट्स रा प्रेजेंट हेक अछि सेति पे याकू कहले आमे सिस्टम यूनिट सेति पे आंसर करिया बी इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये होची कंटेनर जोटरे सब जा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रा लोड हेक अछि तो ये द राइट आंसर इज बी. This is all about 30 questions regarding police सब इंस्पेक्टर एग्जाम इंस्पेक्टर एग्जाम. तो वर्तमान तुम मान को मो 5टा क्वेश्चन दूची तुम्हें आर आंसर ठीक आंसर कमेंट बॉक्स लिखो. हियर इज द 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, code consists of lines varying width and length that are computer readable are known as dash. Second question thala, what is the permanent memory built into your computer called dash. Help menu is available at which button. A DVD is an example of a dash. The computer and communication technology such as communication links to the internet that provide help and understanding to the end user is known as dash. Our answer तुम्हें comment box रे जणेबो. Thank you.